Yes, it is visible. Good morning, sir. Good morning, everyone. Uh, Keep it in full Our screen topic mode. is full stream mode. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. My name is Victor Shinacharji, and I'm the group members Ashim Kumar Buragohai and Divyangs, and our topic is bookstore management system. Basically, our mini project bookstore management system is all about to store the collection of and the collection and manage information about book publisher, customer personal information, and it use to analyze uh, uh, and store the information about the customer publisher when necessary to produce reports. The main purpose of our project is uh, to support the book orders, current status of the books, customer order processes, and customer personal information. As we can see that in here, we have created a data dictionary for the table stores, the data dictionary for books, data dictionary for publisher, data dictionary for author, data dictionary for orders, and data dictionary for customers. So basically, in this table, we have created an attribute store ID, address, city, state, zip code. As we can show in the practical part, and in this we have created a data dictionary for books, that is the book's ISBN number, the book title, author ID, and publisher ID. In this data dictionary, we have the attribute publisher code, publisher ID, publisher name, and the email address of the publisher, as well as the website of the publisher. In the data dictionary for author, we have the attribute author ID, first name, last name, email address. And in the data dictionary for orders, we have order ID, order date, order status, customer ID, price number, and discount number. And in the data dictionary for customers, the attribute we have customer ID, first name, last name, address, city, state, zip code, and email address. Sir, Yes. sir, here we can show that we have created a table Mm. named First of all, I store. have a question in my mind. What Yes, sir. exactly the data dictionary is? Sir, data dictionary means আমি যেটো টেবুলটো বনাই আছো তো এই টেবুলত যেবিলাক আমি ডেটা টাইপ তাৰপিছত এট্ৰিবিউট সাইজ যেটো আমি ইউজ কৰিম এইটো মানে অলপ একটা মানে শৰ্টৰ ভিতৰত মানে আমি এইটো মানে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ বিচাৰিছো Okay, but you know that we have means different terminology with respect to this term, data dictionary, dictionary, right? I hope you all know that. yes sir So is it not confusing with that one? Friends, data dictionaries are basically whatever the attribute data type we've used in the table. We are just explaining this in the data dictionary. Okay, you mean to say that the variables that we are using means that the Yes, attributes sir. we are using, we Yes, want sir. to keep information about or properties of those attributes in the data dictionary. Like this one, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. store ID, I can see this is of data type number and the size and this column status, Description. and along with that, yeah, that description. These things with respect to this particular attribute. So similarly, you Yes, sir. want to give every attribute information in this particular data dictionary, right? Yes, sir. We want to keep every attribute information in the data dictionary part only.
So the project, or what's the title of the project? Sir, basically, we are not doing any web-based project, as this is a DBMS project. So we thought of doing a project using the DBMS. Database, I got it, but Yeah. as what is the term of the title of your project? Sir, a bookstore management system. Okay, तो ये जो आप बना रहे हो, this the base part is okay, but I want you to means integrate this part in particular website that you will develop. I'm not saying that that should be a very attractive one or that will include the more features, but that will be good if you integrate this part there. Are you getting my point? Okay, So sir. the main purpose of giving Yes, this sir. project to you, so that we will get to know that what is the front end and what is the back end, and then how the communication is occurring between these two ends, right? If we are working on the only on the back end parts, then that is okay, but still we want something in the front, right? So Abhik, in the coming days, because it's only the first phase of your project, it is acceptable, but you can take more time, but do that part, right? ठीक है, ये कर लेना आप. Okay. Okay, now you continue Okay, with sir. this. So now basically in the data dictionary part for stored, we tried to explain the tables in the data dictionary part. Yes. And now you just come to that we Oracle means that you have just opened. Oracle. Yes. Okay, sir. What is the practice? You are using Oracle, right? Yes. तो ये बस एक Yes, sir. टेबल का बता दो, और that is okay for today's presentation. ओके सर तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे टेबल स्टोर हम लोग ने बनाए हैं, तो हम लोग का टेबल स्टोर के लिए जैसे स्टोर का आईडी नंबर, स्टोर का एड्रेस, स्टोर कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और स्टोर का जिप कोड क्या है, वो हम लोग ने यहाँ पे दिया है. Yes, this is the table. Now, yes, sir. Run it. Sir, we have inserted the table, but select all. You have already inserted. Sir, we have inserted the table. Okay. Now so we have inserted the table. The main problem is that so we have some facing some errors. इसलिए हम लोग का टेबल वो शो नहीं हो रहा है सर. No. Select. You can copy this one. Select all from the table name. टेबल का नाम क्या दिया है आपने? टाइप करो नीचे. सर is the insertion part successfully executed or not? Sir, not yet. Successfully execute नहीं हुआ है insertion part? नहीं सर, successfully executed नहीं हुआ है. अभी भी बहुत हम लोग का तो what is the error they are showing? Sir, maximum time तो सर values not enough ऐसा शो हो रहा है. Constraint violated ये भी maximum time शो हो रहा है सर. तो हम लोग वैल्यू तो पुट कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग का रॉ इंसर्ट हो जाता है, लेकिन जब हम लोग टेबल शो करने जाते हैं तब प्रॉब्लम हो रहा है. मतलब ना वैसे आई एम आस्किंग द सिंपल क्वेश्चन दैट जब आप इंसर्शन कर रहे हो तभी वो एरर दिखा रहा है, या इंसर्शन होने के बाद जब डिस्प्ले करने जा रहे हो that time that error is being shown? In which part? इंसर्शन कुछ टेबल में इंसर्शन तो हम लोग का हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग जब डिस्प्ले करने जाते हैं तो सर वहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा है. और कुछ टेबल पे जैसे हम लोग का 6 टेबल्स है, वहां में से नहीं, मुझे 6 टेबल सुनो विक्टर, डोंट गो टू दैट अदर टेबल्स. मुझे इस टेबल के बारे में बताओ. इस टेबल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस टेबल? इस टेबल में हम लोग ने तो इंसर्ट एट फर्स्ट किया था, तब तो करेक्ट शो कर रहा था. उसके बाद नहीं, इंसर्ट वन धीरे बोलो. तो इंसर्शन हो गया था पूरा? हाँ सर. तो अभी सिलेक्ट ये वाला कमांड डिस्प्ले करो. सिलेक्ट ऑल लिखो डायरेक्ट. सिलेक्ट ऑल.
ये जो ऑल ये ऊपर ऊपर जो आपने लिख के रखा है सिलेक्ट और उसको कॉपी करो. ओके सर. सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर 1 होगा वो. हाँ वही बोल रहा हूँ. वो दैट यस सर. So the first table, when you Yes, select, sir. प्रथम टेबल खुलना है. ये तो लाइन आपको एक बार एग्जीक्यूट करा. Select all. ये वाला लाइन फिर से एग्जीक्यूट करो. Yes sir. अब फिर से मैं टाइप करने के लिए नहीं बोल रहा, वो टाइप किया ही हुआ था. ठीक है, लिखो. इस लाइन को सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो. आ गया सर. अभी कैसे आ रहा है सर? उस टाइम सर मैंने मतलब ठीक है पॉज इट. आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग एल्स. अभी के लिए, आज के लिए इसी टेबल में मैं पॉज कर रहा हूं. बट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन एवरीथिंग विल बी रेडी. Whatever the errors you will find, you will debug them. Okay. Anyway, Victor has done a good job that you have initiated from your group and you have presented. Thank you, Victor. Thank you, sir.